Thank you to all, and to attend my audio-visual class. I am discussing about the analysis and evaluation of symptom. Now, I have told the detail about the different type of symptoms according to their value, in which I found that there are two follow the one follow Dr. Kent, who gave stress on the mental symptom and he gave highest value to the mental symptom, and next is Dr. Bonninghausen, who give to the fundamental symptom, that is complete symptom. Today, now I have finished the evaluation of the symptoms. Also, you have finished analysis of the symptom. You have also finished gradation of the remedy. I think theory is not better to understand than practical. So now we are starting practical. Now starting practical. Now starting practical. How to use a repertory, and say the topic today is repertorial analysis with case. Now I am giving you a case and how we analyze the case according to the method of analysis. I am starting first BTPB with the first repertory, BTPB. So in BTPB I have divided into 7 parts, in which mind and intellect is the first part. First, I want to say all which repertory is useful, it depends on your hand. See the case, which type of case you have. If case have more general symptom, more physical general symptom, mental symptom, clearly then we use Kent repertory. If there is no clear general symptom or mental symptom, we use Bonninghausen, because Bonninghausen, although mentioned in his repertory mind and intellect as a first chapter, because it does not mean that he ignored the mental symptom. He say, you can see in the preface of the BTPB, that mental symptom is important for individualization of the patient. It is a personal symptom of the man, so it should be considered. But how we take symptom, we cannot get proper mental symptom. So this is why, if there is no mental symptom clearly, worthless, because to use this or will confuse you. So he say that if there is no clear mental symptom, then correspond the symptom with the characteristics particular, like location, sensation, which is clearly found. So thereby he does not mention only characteristic mental symptom mentioned by Dr. Bonninghausen to consider that is a characteristic mental symptom. Now next, if there is mind and intellect is not properly arranged, you can see no man can express himself. आप बात करेंगे अगर किसी से, पूछे हाउ डू यू थिंक, कैसा सोचते हैं, अभी कभी नहीं एक्सप्रेस करेगा कि हम उससे हम जलते हैं, उससे हम ईर्ष्या करते हैं, हमको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, हम ये चीज़ नहीं चाहते हैं। तो माइंड में क्या है, 24 आवर आपका व्यू चलता रहता है।
अगर उस व्यू को आप एक्सप्रेस करते हैं, जैसा व्यू एक्सप्रेस, तो क्या कहेगा, वो पागल है, नहीं? तो आप क्या करते हैं, उस व्यू को सप्रेस करते हैं और अपने अनुसार मॉडिफाई करके बताते हैं, तो करेक्ट मेंटल सिम्टम हुआ? नहीं हुआ। उसी तरह से मेंटल सिम्टम में दिक्कतें आती हैं। तो अब दूसरा है कि अगर कहीं पार्टिकुलर नहीं है, जैसे वन साइडेड डिजीज, नथिंग मोर, आप कैसे उसमें लेंगे, क्या लेंगे? लोकेशन फिक्स है, नो सेंसेशन एट ऑल, तो वहाँ पर हम लोग जनरल सिम्टम को लेते हैं और वहाँ हम लोग केंट मेथड को यूज करते हैं। जनरल मीन्स आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट, माइंड में सबसे पहला क्या है, लव एंड हेट, व्हाट ही लाइक, व्हाट ही डोंट लाइक, liking disliking should be clearly expressed by the patient. Second, their response of your question, how he give answer during interrogation, how he behave, that is gesture, posture is very important to collect mental symptom. So you can take mental symptom, but it take time more, and sometimes you cannot take mental. Particularly those are beginner, those have not studied mathematics properly, they never be able to take a mental symptom. You can take only common symptom, and so therefore, Bongasan mentioned here that if mental is not meeting properly, then we should relate with the other symptom like location, sensation, etc. So here Bongasan divide the particularly more detail. In first chapter is second chapter location, sensation and complaint. He has further subdivided this sensation and complaint into three glands, bone and skin. What type of feeling? Sensation कैसा है, formication है, gland inflamed है, and next sleep and dream, very important, not least than mental symptom. How do you sleep? Which type of dream you used to see? कैसा सपना देखते हो, किस कलर सोते हैं, पोजिशन, पोस्चर, है ना, etc. एंड लास्ट in case of fever, he detail in the case of fever, that time he said that very difficult to treat the fever in homeopathic, but it is not so true. If fever has been 100% correct if where there is no clear etiology. तो यहाँ पर हम लोग फीवर को डिटेल उन्होंने किया। पहला क्या, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का क्या मतलब है, फीलिंग, हॉट कैसे है सब। तीसरा उन्होंने दिया कि फीवर को 3 स्टेज में बांटा, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड स्वेट स्टेज, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड स्वेट स्टेज, एंड विथ अलॉन्ग देयर इज जनरल कोल्डनेस फीलिंग। अब पर्टिकुलर आप कैन सी जैसे नक्स फॉर्मिका फीवर, although hot fever is high, body is warm, in spite of that she does not want uncovering because there is coldness present. And compound fever, जिसको कहते हैं mixed fever, compound fever, and if any concomitant in the fever. So here particularly fever has been explained in detail, divided in detail for to take the, but it is easy to get, यह आसान है, पेशेंट बता सकते, लोकेशन फिक्स है, लोकेशन में कन्फ्यूजन नहीं हो सकता, सेंसेशन में कन्फ्यूजन हो थोड़ा बड़ा फिर ज़्यादा नहीं होगा। उसी तरह से मोडालिटीज़ तो मस्ट परफेक्ट है, वो कभी आदमी उसको गलत नहीं कर सकता। इसलिए केंट ने भी माइंड के बाद हाईएस्ट वैल्यू दिया मोडालिटीज़ को।
जनरल में, जनरल मोडिलिटी ज़्यादा प्रेफरेंस है। अब उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट है अल्टरेशन ऑफ द स्टेट ऑफ हेल्थ, कैसे चेंज कर रहा है। समटाइम फील हॉट, समटाइम फील चिली. Alternate symptom. I have already told in previous classes importance of alternate symptom, alternate diarrhea, alternate constipation, alternate hemorrhoids with joint pain, so many. And in alteration of state, which includes time modality, in which time you get worse, it is general. Sometimes people are very cheerful in morning, some people very worse in morning, very lazy. Sometimes people are very worse afternoon, some after evening, at night, some more cheerful at night, more cheerful at evening. They are different. And so this attention of health, alteration of health includes time modality. Another situation, in which situation if he very cheerful, in the company, or in when he is alone, or in a crowd, or in a public place. So this, as for जैसे tuberculinum, आप पढ़ेंगे tuberculinum, calcaria fos, कार्सिनोसिन. अब है कि tuberculinum पेशेंट जो है वो बराबर घर से बाहर रहना चाहता है ना. वही कार्सिनोसिन भी सिमिलरिटी है दोनों में. वो होगा घर से बाहर, क्यों घर में रहेगा नहीं. जब होगा शाम, मिलते हैं ऐसे आदमी ना कि सुबह हुआ टाइम बाजार निकल के कहीं बैठे हुए हैं, किसी दुकान में बैठे हैं, कर रहे हैं. दैट टाइम विल बेटर व्हेन इट कंपनी और विद इन सोसाइटी. सो ये दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द circumstances, situation, circumstances like when there is workload up, there is some excitement news, or where some emotional become work. Where these circumstances as in the field of work anyway. And position, lying position, sitting position, crawling, swinging to and fro. These are position. कोई पैर को हिला रहा है, पोजिशन कर रहा, कोई आदमी ऐसे हिल रहा है लाइक कालिका. So this position is also helpful in determining the individuality. And last is very important, that is relationship of remedies. That is a very important chapter mentioned by Hahnemann, Bonington in the last part. But it is very sad news that no one understands that time. When Bonington written this chapter in 1836, nothing comment on this. No one used this. What is the utility of this drug relationship? But today it is appearing very important, because I deal in separate class that is concordance, relation of the remedies, which helps you in second prescription. You know me well, suppose that a case you are treating, a case you are treating and not improving at all. You have given medicine, but what will be the next medicine of that? जैसे you have mentioned Allen's in his Mathematica, aconitis, acute of sulfur, pulsatile acute of silesia. What does it mean? It means they are vegetable analog. He has said the only vegetable analog right, but they are symptom when you see separately. अलग अलग सिम्टम आप देखेंगे तो कैसे पल्सेटिला जो माइल्ड एल्डिंग डिस्पोजिशन है कैसे फॉर्म हो जाता है वो साइलेसिया. हेड स्ट्रॉन्ग ऑब्स्टिनेट, वो नहीं बदल सकता. कैसे इग्नेसिया जो इतनी सॉफ्ट स्पोकन हाईली एफेक्शनेट है, और कैसे नेट्रेमूर कन्वर्ट हो जाता है जो डिसलाइक एनी टाइप ऑफ कॉन्सोलेंस, चेंज हो रहा. एकोलाइन फ्रिक्वेंट एटैक कैच कॉल्ड इजिली, बट face become red and pale, and how it become sulfur converted. So it is very important to study Mathematica, every medicine with their relationship. It helps us particularly in selection of
second remedy for second prescription. And when patient is not improving at all, then we help. And which medicine come after sequence? आप देखेंगे कॉन्ग्रेस में पल्सेटिला, साइलेशिया, तो कैसे सिम्टम चेंज कर रहा है आपको देखने में मिलेगा कि आप एक मेडिसिन में मान 10 मेडिसिन में एक सिम्टम कॉमन है जो 10 में है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो रिलेटेड है। ये बात नहीं कहते हर मेडिसिन का इंडिविजुअल सिम्टम होता है, पर एज ए मास टोटलिटी देखिएगा कि बहुत सारे सिम्टम हैं। जैसे हेडेक बहुत सारे मेडिसिन में, चूँकि रेपर्टरी में आप देखेंगे एक हेडेक के लिए मोर देन 50 मेडिसिन है, पर सबका सिचुएशन अलग है, सर्कमस्टांसेस अलग है, मॉडलिटीज अलग है, क्लास है। ऑलराइट, अब जैसे केस बताते हैं आपको एग्जाम्पल, तो कैसे एनालिसिस करते हैं हम लोग, क्या डिफ़िकल्टी होती है मेंटल सिम्टम में। मैं केस एग्जाम्पल बताता हूँ, अपने ही कॉलेज हॉस्पिटल का था। वो एक लेडी थी और वो सफ़र कर रही थी बहुत दिनों से कि वो बातचीत नहीं करती, हंसती नहीं थी, बोलती नहीं, चुपचाप पड़ी रहती। घर के लोग परेशान थे कि जो बहुत हंसती बोलती, इतनी हार्डी थी, इतनी मेहनत की, और जब सुख का समय आया तो इसको इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, अब वो केस को बहुत लोगों ने देखा और सब मेंटल प्लेन पर देखा, पर मुझे लगा कि मेंटल प्लेन में ये कुछ बता नहीं रही है। मान लीजिए पहले गरीबी थी, हार्ड मेहनत की, अब तो सब कुछ है, बच्चे हैं, सब है, पूरा परिवार है, पर अब क्यों दिक्कत है, क्यों उदास है। अल्टीमेटली हमने उसके पर्टिकुलर की ओर गया, लोकेशन है ना, जैसे कि दर्द बाएं साइड माथे में होता है, सिचुएशन व्हेन सी अलोन बिकम वर्स, है ना, अकेले में बहुत बेचैन, घबरा के, है ना, और इधर उधर घूमने लगती थी। तो ये सब सिम्टम जब हमने उसके सारे सिम्टम को पार्टिकुलर से जोड़ा, लोकेशन से जोड़ा, सेंसेशन से जोड़ा, मॉडलिटीज से जोड़ा, तब वो केस क्लियर हुआ एंड केस वाज ऑफ सिपिया। और जब मैंने सिपिया को पढ़ा तो देखा कि बिल्कुल है, दो ही सी लव बेस्ट नॉट डू नॉट लाइक टू सी। So this is more about the analysis of the symptom with case demonstration. I will give you more case, but just I am here to finish here and to be content with this terminology of the boningation which I mentioned, and all have important. All are important. Though he never discard the mental symptom, he also agree that mental symptom is the main symptom for individualization, for analysis of the symptom, very important, but it is so difficult to take. So the way we do difficult case, अगर हम नहीं हो पा रहा है तो सही करना है, नहीं सही पा रहा तो गलत होगा, तो आंसर गलत मिलेगा। तो क्यों नहीं हम उसको पार्टिकुलर से जोड़ें और लोकेशन जो है, और जो है जो अदरवाइज कैन नॉट मिस, सिम्टम सही जवाब दे सकता है पेशेंट, उसको देखें। ऑलराइट, थैंक यू।